So, well, again, it's a very warm good morning to each and everyone. And soon we are going to start this 25th day of this TEDP, Technology-Based Entrepreneurship Development Program. So I request to core committee members to kindly just drop one more messages to our participants so that we can start the session very timely. Well, we have come so far, and it's a great journey of 24 days. And even I just talk about the yesterday's session taken by Mr. Rahul Khanna was definitely very, very educative. How many things they are doing in a practice and what is the importance of the CAD and design of a product. That's very important. And that definitely it was very admiring and inspirational that how this particular design thing and design aspects are important for entrepreneurship and any kind of a new business startup of an idea plan. So design of a product is a key factor that we should keep in mind. That's an important aspect. So it was a great that definitely the participant could be able to understand that how a simple thing with the help of a new design aspects would be better for a new entrepreneurial activity or for making your business better at what level you are working up, no matter whether it is in some thousands level or maybe in lakhs or CRs, but every time there's a scope to make it better. So that is what exactly the key part and the feature of the designing of a product. So that's important aspect. So we expect more new things we would be able to know during these sessions. Now I request again to our co-committee members to kindly reignite our participants so we can start the session very timely. So Salim sir, I will give 5 more minutes to our participant to join the session. Okay, sir, okay. And we'll immediately start at 10:05 our session. Okay, sir. So,
while getting a little turn of the participants are joining us. And I hope so that in the next 4 to 5 minutes, we shall have almost all the eligible participants would be able to join us. And we can start the session nicely. So, well, once again, a very warm good morning to each and everyone. And at the capacity of the convener of this TEDP, I welcome you all again. And obviously, it is 25th day, a long journey we have come together. That's a great one. And if we see here, the large number of different kind of aspects of the session has been taken by our different eminent speakers. So overall, it is all a win-win situation for each and everyone. As the organizer, we and as well as the participant, that we are having a great platform to just connect ourselves with the things which are actually happening around us. So this is a good thing because the one who is doing a wonderful practice at their respective venue, and here we are getting a chance to really know about that how you are doing the things and what are the effects over there. So I definitely say good morning to Mahinsa. Mahinsa, good morning. Good morning, Pankaji. Yeah, how do you do? Well. Yeah, I know you must be well always. So nice. So well, I will start exactly the session at 10:05. So thank you for joining us very timely. So I request Salim sir. Salim sir will start the session exactly at 10:05. And it was definitely a very wonderful session. Okay, sir. Mr. Rahul Khanna, and he definitely we enjoyed a lot. And the things he, yeah, really, the thing he showed to us, like related to kind of a different kind of a designing of what kind of a practices you people are just doing there for the CAD related and the 3D printers. That's all wonderful. So we enjoyed a lot, and thank you for making us connected with him. Thank you. It's a pleasure to us. Yeah. So now, Salim sir, it is over to you. We'll start the session 10:05. Meanwhile, the platform is always open for the participants. If suppose something is there you are feeling during the session and you feel that has to be discussed with us, so always we welcome you, because this is not a kind of a thing that we are pouring on you. So you all are always welcome with your suggestion, your idea, the thing you are looking for, the aspect you are thinking from this TEDP, that all are welcome. Come up, have a discussion with us. Definitely we'll go for that, because we are looking to make it better. And definitely that is the expectation and the key desire of our eminent speakers too. They're also looking for the same one. So always welcome. So you can come up, you can just share your things. If specifically you're looking for certain kind of a module that can be included as a part of this TEDP, that all are welcome here. So not taking much time. So now I request Salim to kindly just proceed for the session. Mahin sir is here. Okay, sir. Thank you very much, sir. First of all praises and applause for the Almighty. Distinguished delegates, eminent speakers, participants, directors, and organizing committee. Very warm good morning to all of you. Really, as Goswami sir said that we have entered 25th day of TEDP. It's a very glorious moment for all of us to enter 25th day of TEDP.
financially sponsored by National Science and Technology, Entrepreneurship Development Board, Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, Government of India. I extend heartfelt congratulations and warm wishes to entire team of TEDP, especially to our director sir and our convener Dr. Pankaj Goswami for organizing such a wonderful event and providing the opportunities of learning to our students and staff as well as other participants from outside TMU. I welcome all participants and our eminent speaker, Mr. Mahendra Gupta, sir. Sir has more than 16 years of experience in the field of innovation and entrepreneurship. He has served in reputed institutions as a key player to set up innovation and entrepreneurship ecosystem, including site Ghaziabad. His specialization in the domain of entrepreneurship allows us to set up technology business incubator and innovation entrepreneurship development center supported by Department of Science and Technology and MSME in past reputed organizations. His experience includes entrepreneurship and incubation ecosystem development in the institutions, universities, and schools. He has filed and published 2 patents for designing for innovative table for infants and plate dispensing and counting machine. He received Young Achiever Award in the area of entrepreneurship development from Entrepreneurship and Skill Development Association of India in the year 2016. He is a certified management consultant from DSIR, DSP Government of India and accredited entrepreneurial motivational trainer by NIES BUD Noida and Apex Institute under the Ministry of Entrepreneurship and Skill Development, Government of India. He is also a certified trainer in call training methodology by International Finance Corporation, an entity of World Bank and NIES BUD, Government of India. Currently, he is working as a CEO of iNurture Incubation Foundation, ABESEC, a not-for-profit technology business incubator registered under Section 8. The iNurture is supported by Ministry of Electronics and IT, Government of India, with cost of rupees 1.7 crore under TIDE 2.4. He is also engaged with the Department of Science and Technology and Ministry of MSME through entrepreneurship and innovation mission activities. Sir, we are highly obliged and we are happy to welcome you. And I request you please bless us with your words of wisdom. Sir, it's over to you. Manoj sir? Mahendra sir. Thank you. Thank you, Salim ji, for this warm welcome. Thank you. In fact, when you know reading the profile, so I was thinking about in past 3-4 days, I'm listening about myself only. So thank you for this. Let's begin this session here again. Thank you. I wish we all the participant here. Participant means who participate actually, right? They are not the student, they are not the attendees who attend. They are participating, right? So learning and gaining knowledge or collecting information, both are the different thing. When I speak only, you collect some information. How much you are able to retain it in future, that's differently, you know, a matter of concern. But learning is only possible when you also come out and try to participate. So I request everyone with my folding hands, please be participative, please be interactive. If a certain percentage of people will come and forward and participate, they definitely, you know, we both can make this session fruitful for
not only for you, for me also, because see, I can't say now I know everything. This is never gonna happen. So till the my last journey, we are in a mode of learning, and that learning is only possible when we both are interacting. Just hold on. So today in the session, Pankaj ji, I put my apologize. मैं बीच में 10 से 15 मिनट का एक छोटा सा गैप लूंगा because of someone is coming to be ना for short interaction. No So issue. उस समय से pause करेंगे, बाकी मैं ना will continue. No issue. आप उनके लिए like just drop anything idea for them. The participant will be speaking on the same point. Yeah, definitely. Sure. Yeah, fine. All right. So I wish to understand today before I move mine the where I was left day before yesterday. We are now thinking about the enterprise in 3 domains: either industry, other service, or business, ISB. And I wish to understand that what you people have now understand with my last conversations. So first question I wish to ask you, that is, what mean by industry? What is industry that I was told you? Sir, industry is a setup of, means is a combination of different firms producing or creating services. Okay. Means as individual body, we can call it a firm, a company, but as a group of same nature or same kind of firm, we call it industry. I think you are right, Salim Sab, but in the layman language, when we actually spread the entrepreneurship concepts and development process, we understand the industry in terms of where reverse engineering is not possible, right? In a large cases, like case of very small micro level enterprise. एक कुम्हार की बात करता हूं जो कि अपने चाक पे एक मिट्टी का ना बर्तन बनाता है. सो बर्तन बनने के बाद, पकने के बाद उसको वापस रॉ मटेरियल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता. I hope you all are agreed with my point, right? So industry works in a similar manner. आपके यहाँ पे ब्रास की इंडस्ट्री है. ब्रास इज अ रॉ मटेरियल, उसको मेल्ट करके फिर आप एक बर्तन बनाते हैं और वापस फिर उसको आप एक एग्जैक्टली जिस फॉर्मेट में आपने रिसीव किया तो उसमें कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है. दो दे आर द सम केसेस वेयर ये चीजें जो है फिट होती है, लेकिन बाय एंड लार्ज हम इंडस्ट्री को जब कंसिडर करते हैं तो ये देखते हैं कि उसके प्रोसेसेस से रॉ मटेरियल में परिवर्तन आता है, चेंज आता है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस में, उसके प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं. सो यहाँ पर जब भी हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो एक व्यक्ति एंटरप्रेन्योर 3 तरीके से बन सकता है, जो कि है इंडस्ट्री. इधर वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाए, फैक्ट्री लगाए, या फिर एक सर्विस एंटरप्राइज लगाए, या फिर वो बिजनेस करे. बिजनेस मतलब ट्रेडिंग करे. ये 3 तरीके हैं एक व्यक्ति के एंटरप्रेन्योर को बनने के. अब मेरा प्रश्न आप सबसे यह है कि जब भी आप ये चुनाव करेंगे कि आपको क्या करना है, तो उसके लिए मैंने फर्स्ट लेवल ऑफ फिल्ट्रेशन आपको बताया था. और ये लेवल ऑफ फिल्ट्रेशन जो है ये साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट, टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी और इन सब चीजों पे बेस्ड है. आप जो करना चाहते हैं उसको, जो भी बिजनेस आइडिया आपका है उसको इस फॉर्मेट में पास ऑन करें और आपको फर्स्ट लेवल ऑफ फिल्ट्रेशन से सर्टेन नंबर ऑफ बिजनेस आइडियाज मिलेंगे. मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए पॉज करना चाहूंगा बिकॉज वो बंदा जो व्यक्ति है वो आ चुके हैं. मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ड्रॉप करके जा रहा हूँ. I was asked you to be think about some idea where you are
doubling the income of a गोलगप्पा मेकर जो पॉट लगाते हैं, हमारे स्टॉल लगाते हैं, या फिर वेजिटेबल्स जो कि सोल्ड आउट करते हैं, इनकी इनकम को डबल करने के लिए हम क्या बिजनेस आइडिया प्रेजेंट करेंगे, इस पे मैंने आपसे पहले भी बात करी थी और मैं उसको आपको छोड़ के जा रहा हूँ। मैं जब आऊंगा तो आपसे उस पर ही सटीक बात करूंगा, और ये एग्जैक्टली पॉज है 10 मिनट का सर, 10 मिनट के अंदर मैं आपके सामने आ जाऊंगा। पंकज जी, कैन आई? No issue. Absolutely, sir. Absolutely. No थैंक यू सर, problem. थैंक यू। So, well, our today's amenity speaker has just dropped a little kind of a think process to you all. That it's a simple thing. Like if suppose you are finding somebody is there nearby your roadside, peoples are there and earning whatever the amount he's earning from morning to till evening. So what do you think? So what could be the possibility and what kind of idea you can put to just double its income? Just take an example of simple of vendor who is just selling out some samosas and some anything is there. The matter is that whether is it possible for us to put an idea to that particular person, or we can create an idea to that person so that he can just double the income. If we are capable to make such kind of a good ideas, definitely those ideas would be helpful for our life also as well. Whatever we shall be doing, obviously if we have a creativity to make it more efficient, we have a creativity to get more outcomes. So money is basically somewhat an outcome. तो ये एक अच्छा अपने आप में that's definitely a good point. So this is absolutely given to you all, and keep thinking on that. Just taking an example, आपका कोई भी नियर रोड साइड वेंडर हो सकते हैं, कोई भी कुछ भी सेल आउट कर रहे हैं, और इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन टू यू. एक प्रोजेक्ट दिया है, किसी कंपनी ने आपको प्रोजेक्ट दिया है कि मुझे रोड साइड वेंडर्स है, इनका इनकम जो है वो डबल करना है. सो व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटीज, बेस्ट पॉसिबिलिटीज. सो दैट इज बेसिकली अ थॉट प्रोसेस. मीनवाइल एंड एवरीबॉडी इज हियर हु विश टू इंटरेक्ट, जो इंटरेक्ट करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि राइट नाउ वी कैन हैव अ डिस्कशंस ऑन दैट, they are most welcome. So because of any urgent kind of a meeting is there of today's speaker, Mr. Mahind Gupta is there, so he's just taking a 10 to 15 minute break. So we'll start the session after 10 to 15 minutes. But meanwhile, the thought process is going on, and at the capacity of the convener, I'm here to talk to you. I'm here to provide you all kind of facilities you are looking for. If you are finding some sort of the difficulty during this TETP, you are most welcome to come up and share your ideas. If you are finding that this TETP can be much better and more effective, so you are again welcome to come up with your ideas and suggestion. And meanwhile, your experiences, if you're feeling something, that can also be discussed. So everything is there. It is an open platform. We understand that many of them are a student, many of them good practitioners are working so nicely around the world, and we understand that everybody has an idea in mind, but putting it on a common platform, discussing it is more important. So that's exactly very, very wonderful. And meanwhile, it is a great opportunity for us. Today we have our TEDP General Chair and as well as the Director of ECS, Professor R.K. Dwivedi sir is also with us. And it's a great honor for us, sir, that you have joined this session. So very warm good morning. Thank you, Doctor. Yes, sir. So that's always good for us, that always you just give your blessings and shares. I just wanted, in fact, to see that see the progress, because this is some kind of session which is taken by Mahendra Gupta ji, which is related with the practice-based entrepreneurship training. So, in fact, we are having that PhD interview for new entrants. However, just to see that how things are progressing, and it's a marathon kind of entrepreneurship development training program, and definitely the team is doing well, convener is doing well, and ultimately because of the virtual mode of the training, the exact feedback and exact learning outcome as of now I am not able to visualize. However, I must appreciate the efforts of the team members. In fact, in the morning, they usually try to connect everybody, and
this is needed. In fact, although we are very much connected with the parallel kind of working, many of us, we have, because due to this COVID pandemic, the winter break is gone. We are continuously working without any break. The in fact, the external weather conditions are also not favoring us much because of too much cold. But anyhow, credit goes to the team that they are maintaining the show by all means. What needs to say about this training program? Training program is basically this National Science and Technology Entrepreneurship Development Board has funded us to create a dynamics related to the entrepreneurship across the country. In fact, they have divided it in 3 modules. First of all, they wanted to provide the training for faculty members of the university, so that this is a general concept. If anybody wants to plant anything or nurture anything, they push it to the education domain, because any seed could get nurtured in better way. That is the university. And this entrepreneurship culture, as government wants to promote this culture, because ultimately our service sector is not going to up. Our world stack is not very high on that. Our manufacturing sector is down. So how we can get a better employability? And that is only because once we promote the entrepreneurial culture. So at first stage, we have been directed by Department of Science and Technology and Ministry of Education to provide the training for faculty members. Thereafter, another domain wherein government has emphasized, that is women entrepreneurship development program. And for that, we have conducted 1 month training program for the women's age between 18 to 40 of the local region. And on that training program, the State Minister of Science and Technology, Madam Neelima Katiyar, has also addressed, and she has also vouched that what needs to be done for the promotion of entrepreneurial culture. And at last, because this is the age of the technology, everybody could understand and sense the technological advancement across the world. After 1990, and this is 2022, things are changed drastically in terms of technological advancement. Either that is hardware, software, sensor-based technology, Industry 4.0. So, lot of business, new kind of business. We could not think, in fact, we could not imagine that the type of business has taken place. Online shopping. In terms of Indian context, nobody was predicting that online shopping concept may become popular in Indian domain. But it is not only existing, it has captured all the market. So how the entrepreneurial culture can be promoted more, and how we can meet
the challenges related to the employment with the support of entrepreneurship. So a lot of regulatory framework is also discussed in between. Those who are the expert, they have taught us the various nuances related to the company building. What kind of financial facility? In fact, Mr. Vikas Yadav has also given a lot of knowledge related to the loan facility. All right. And a lot of motivation kind of talks also been done, where we have learned that how to prioritize the plan which you are having in your mind, how to give a shape to your imagination with respect to the technology, with respect to the many various kind of technology, either that is IoT or cloud based, or related with the some kind of analytics or general application development. So how to prioritize your plan. And another domain which has been taken care, that is the speed of rollouts. That means what exactly on that how you have to roll out your plans with your team. All right. On that domain also our speakers have covered. Then investment part also taken care. Investment, how to do investment in your business, and that kind of cross functional requirements on that case. All right. Empowerment of individuals to respond in crisis, that human resource kind of training is also provided in the this is the 25th days. So you could see on these 25 days what kind of things has been taken care. In fact, our team is also preparing the manual for the same, that so that later on it could also be referred by the university people or by ourselves whenever we need a direction related with the entrepreneurship. And at last, we have learned that people first of all, we have to value for the people the importance of focusing on our team, our employees. And COVID situation is also discussed, that new very much new kind of business especially related with the health domain. You could see how many apps has been developed to measure oxygen level, to measure the BP, to measure other important important parameters of your body. So many domain is affected by the technological advancement as of now, related to the insurance, healthcare, payment system, and as well as general application, and definitely these are easing out the process. Earlier we were performing many things in manual. Now all things are available, either that is related with the route chart, either that is related with the billing process. So I hope this at the end of this session, once we are going to accomplish this complete session, we may aware about that how technology is helping to transform our ideas with the help of engineering and technology services to provide a better product, to provide a better services. And many other domain, technology is also affecting the many domains.
either that is related with the agriculture domain. That is also one of the major domain where technological influence is very, very, very high. Either that is related with the soil category identification, disease identification, the services related with the natural language processing, etc. and etc. So be focused, and I hope that things will become better in terms of entrepreneurship, entrepreneurial development culture. And our team is also doing well, undoubtedly, because organizing a program of one day or 2 day or 1 hour or 2 hour is definitely easy. However, maintaining a long 1.5 month, like continuous, without any gap, without any chutti, without any break. In fact, we were expecting a good winter break, but we didn't get it because of this Omicron. So my sincere thanks to the whole team led by Dr. Pankaj as a convener. And this is really good that we are making our presence, remarkable presence in social media, in print media, and in Department of Science and Technology, because our work is reflective, and our sincere efforts are also visible, because many people can take excuse that these are the problems, and problem exist everywhere, but the zeal, the temperament, and the determination the team, Faculty of Engineering and Computing Science people are having, and they are pulling it, I must appreciate. And what I think that such kind of positive motivation is really needed, especially in academics, because regularity and consistency definitely wins the race, and success is a triumph of focused will and determination. This is my definition, and definitely team is doing well. Please go ahead, and I hope by the end of this 1.5 months long marathon training program on entrepreneurship, technology-based entrepreneurship development program, we may definitely learning something useful for each one of us. Thank you, Dr. Pankaj. Thank you very much, sir, for your words of blessing. Exactly, it's a great motivational words for us and encouragement you have just given to us. Obviously, this is an encouragement for our participants too. The expectation behind is that at the end of the TDP, one should definitely come up with like a skill that's more important, and that skill definitely not only for the person, but it must be transferable. जो स्किल हम सीखें वो हमारे स्टूडेंट्स में, हमारे नियर बाई सोसाइटी में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होना चाहिए. दैट एग्जैक्टली द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दैट. एंड वी होप सो सर, जितने भी लोग यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, because as you said they are having a number of parallel assignments around the nation, we have peoples, और मेरे पास पर्सनल मैसेजेस भी होते हैं कि कोई कहीं इन्वॉल्व है तो आज वो थोड़ा सा टाइम लेट से ज्वाइन करेंगे. So we have to give excuse to them, देना पड़ता है उनको. So because of that, but ultimately the three objective what we are just picking up, the one objective is a transferring and generation of the skill. Skill will be definitely created. Second is what? The generation and creation of a kind of a good network. And the participant as well as we at the Tirthankar Mahavir University creating a good network of the people, so that in the near future we shall be able to develop a good projects. Third, the objective is there because it is NSTDB sponsored. So certification, this kind of a certification is very, very good for each and every participant. Those are working at their respective venues. Like जो भी जहाँ काम कर रहे हैं for their academic career and for their particular visuality at some places, that particular certification will be good. So we are maintaining all these three objectives. And as this is a platform for today's eminent speaker, Mr. Mahendra Gupta, so he is already here. So sir, thank you very much for rejoining us. Please start. All right, Thank you, Director, sir. Thank you, Dr. Dwivedi, for maintaining a good decorum in this classroom and the entire program. I believe
see a good leader only motivate the fellow to be work. So very good morning, Dr. Dwivedi. Thank you. Good morning, sir. All right, so let's resume the learning. So I was in a day before yesterday, we were discussing the three things. One is called the industry, second is called the business, and third is called the service. All right, so now abhi India jo hai wo, especially if you look at that, we are not the a first nation which is lead in terms of manufacturing. China is in a more getter and higher versions and capacity for the manufacturing, and that's why we see the all around the Chinese items, made in China item. But now India is putting the manufacturing in a different way. So we are, by and large, we are the service enterprises nation, and we are very excellence, doing excellence, and also having a large potential to be excel in the service industry. Now इस तीनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से, अपने विजन के हिसाब से, अपने परसेप्शन के हिसाब से, और उस सिलेक्शन में बेस्ट सिलेक्शन कैसे हो, इसके लिए हमने कुछ फिल्टर प्रोसेस बनाया. लास्ट सेशन में बात करा था, we have, if the time we have generated large number of business ideas, now that business idea transferred into some funnels to get out to take some valuable, potential, economically viable and technically feasible business ideas. So the first check is ये जो filtration का आपका funnel देख रहे हैं, हम इससे पास करते हैं. That, and what is that? Size of investment. Size of investment का मतलब ये है कि अगर मेरी पॉकेट अलाउ करती है कि मैं 4 लाख रुपए का बिजनेस कर सकता हूँ, और इंडिया में जो एक फाइनेंशियल कंपोनेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं DER, डेप्ट इक्विटी रेशियो, ये 1:3 का है इंडिया में. डेप्ट इक्विटी रेशियो का मीनिंग क्या है ये समझ लीजिए. डेप्ट इक्विटी रेशियो का मतलब है कि जब आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, कोई इंटरप्राइज लगाना चाहते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, सो उसके लिए एक पोर्शन आपका होना चाहिए और 3 पोर्शन आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या फिर बैंक से, या फिर किसी और मनी लेंडर से मिल सकता है. नाउ ये एक पोर्शन और 3 पोर्शन किस चीज का होना चाहिए? सो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट, PC. इस प्रोजेक्ट कॉस्ट को निकालने के लिए हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तैयार करते हैं. अगर ये क्या पंकज जी, इस पे बात कभी हुआ है क्या, प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे? यस सर. प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन पे कोई सेशन हुआ है? हाँ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन पे था सेशन सर. राइट. सो यू मस्ट, मतलब दे मस्ट अवेयर अबाउट द प्रोजेक्ट कॉस्ट. Yeah, exactly. Right. So project cost, let's say कि project cost 5 लाख रुपए है, so उसका 1 portion जो है वो आपको लगाना पड़ेगा, which we call the margin money, promoters contribution, and rest 3 portion will be could be raised by any financial institution or the banks. If I talk about financial institutions, तो आप में से किसी कोई बता सकता है कोई financial institution का नाम? सिंपल, ये ज्ञान को टेस्ट करने का नहीं है, ये समझने का है कि हमें पता है या नहीं, बस. Sir, any banking institution like any bank? Any bank and financial institutions में difference है. Okay. Like if we talk in terms of India, that is IDFC. IDFC. Okay. So one answer is in chat box also. Salim sir, can you read for us? Chat box is also active. NABARD, very good. NABARD, yes sir, NABARD. NABARD, IDBI, SIDBI, IDFC, ये सारे इनफैक्ट एक बहुत पुराना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट हर स्टेट में था, विच वी कॉल द स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. जैसे यूपी में था, उसका नाम था UPFC, उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन. तो ऐसे ही दिल्ली में था, सभी जगह था. और एक्चुअल में एंटरप्रेन्योरशिप को एक्सेप्ट करने में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के फेलियर जो है वो बहुत बड़ा रीजन था. मैं आपको कहेंगे तो मैं आपको स्टोरी भी शेयर करूंगा अभी. सो नाउ ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स में डिफरेंस ये है कि बैंक्स जो है वो सेविंग अकाउंट्स को ओपन करते हैं, करेंट अकाउंट्स को ओपन करते हैं और उससे डील करते हैं, पब्लिक डीलिंग जिसे हम बोलते हैं. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिर्फ इंटरप्राइज से डील करते हैं. दे ओनली गिव द फंड लोन टू इंटरप्राइज. नाउ
आपका 3% कहीं से भी, इधर बैंक से या फिर जैसा बैंक का सिस्टम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट में कोई भी एक बैंक, जिसको हम लोग लीड बैंक कहते हैं, ये लीड बैंक डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी फाइनेंशियल पॉलिसीज एग्जीक्यूट हो रही हैं, स्पेशली उसमें एसएमईज की, एमएसएमई की बात करी जाती है, उसको देखने का काम करता है। नाउ ये लीड बैंक क्या होता है? अगर मैं बात करूं मुरादाबाद की, तो पंजाब नेशनल बैंक आपका लीड बैंक होगा। मैं बात करता हूं गाजियाबाद की, तो यहाँ पे लीड बैंक जो है वो कैनरा बैंक है। सिंडिकेट बैंक था, वो कैनरा बैंक में मर्ज होगा, तभी कैनरा बैंक लीड बैंक है। मैं कानपुर की बात करता हूं तो वहाँ एसबीआई लीड बैंक है। मैं लखनऊ की बात करता हूँ, एसबीआई लीड बैंक है। तो इस तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट में कोई भी एक बैंक जिसकी सबसे ज्यादा ब्रांचेस होती हैं वो लीड बैंक कहलाता है, और उसका एक अधिकारी, एक बैंकर जो है वो उस लीड बैंक, इसको बोलते हैं लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, एलडीएम की पोजीशन को चेयर करता है। एक डिस्ट्रिक्ट में एलडीएम की पावर आप इस तरीके से अनुभव कर सकते हैं कि वह व्यक्ति कम से कम 100 से भी ज्यादा कमेटियों का मेंबर होता है। जिले में एक उद्योग बंधु की एक मीटिंग होती है हर महीने, जिसको डीएम साहब चेयर करते हैं, और एलडीएम इंडस्ट्री के और अधिकारी, इंडस्ट्री समूह के रिप्रेजेंटेटिव उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी समस्याओं को रखते हैं, और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स, बैंक्स, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या और डिस्ट्रिक्ट को हेल्प करने वाले सारे विभाग उसमें एक साथ बैठते हैं, ताकि उद्योगों की समस्याओं को एक ही मीटिंग में हल किया जा सके, ऐसा प्रावधान रखा गया है। नाउ ये जो एलडीएम साहब है, मतलब लीड बैंक है, ये क्या करता है, हर ब्रांच में एक परसेंटेज एसएमई के लिए निर्धारित है कि आपको एसएमई को ही लोन देना है। इसकी मॉनिटरिंग का काम एलडीएम करता है, एलडीएम यानी कि लीड बैंक करता है। इसलिए जब भी आप कभी लोन लेने की बात करेंगे अपनी इंटरप्राइज के लिए, सो बैंक आपसे कहेगा कि आपका अकाउंट किस बैंक में है। आप उसी बैंक में जाकर के, ब्रांच में जाकर के बात करिए, और आपको वहां से सारी जानकारी मिल जाएगी। वापस आते हैं। सो ये साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट, जब हमको लगता है कि ये 3 पोर्शन तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन एक पोर्शन मेरे पास नहीं है, या एक पोर्शन में शॉर्टफॉल है। अगर 4 लाख रुपए का प्रोजेक्ट कॉस्ट है, मेरे पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए नहीं, मेरे पास 70,000 रुपए हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैं उस प्रोजेक्ट कॉस्ट के प्रपोजल को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता हूं। इधर मैं मार्जिन मनी को इनहेंस करूं किसी तरीके से, प्राइवेट लोन से लेकर के, बारो करके, फैमिली फ्रेंड से बारो करके, या फिर मैं उस प्रपोजल को डाउन करूं। साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट पे ये पहला फिल्ट्रेशन आता है। फिर टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी की बात होती है। कई बार ऐसा होता है कि जिस प्रोडक्ट को आप बनाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी चाइना से आनी है। अभी चाइना पे बैन है, या चाइना से उस टेक्नोलॉजी को लाने की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। सो ये दूसरा पैरामीटर होता है जहां पे हम अपने आइडियाज को ड्रॉप करते हैं, फिर जो आइडियाज यहां से फिल्टर आउट हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, उन पे विचार करते हैं। आगे आता है साइज ऑफ मार्केट साइज। क्या उपयुक्त मार्केट साइज आपके पास है? 100 में से 10 लोग क्या है परचेस करने वाले, 10% कम से कम हम कंज्यूमर मान के चलते हैं कि इतना होना चाहिए, थंब रूल है। अगर ये है तो मार्केट साइज में आपका आइडिया क्वालिफाई कर जाएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात आती है कि क्या लाइसेंसिंग, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स किसी और के पास तो नहीं है। मुझे एक प्रोडक्ट बनाना है जिसमें पर्टिकुलर गियर का इस्तेमाल करा जाना है, और वो गियर का पेटेंट जो है वो किसी अन्य के पास है, किसी इंटरप्राइज या इंडिविजुअल के पास है। अगर वो पेटेंट मुझे नहीं मिलेगा तो मैं इसको कॉमर्शलाइज नहीं कर पाऊंगा। मैंने अगर इसको कॉमर्शलाइज कर भी दिया, और अगर इन्फ्रिंजमेंट लॉ के अंतर्गत या अंडर द लॉ मुझे अगर करप्ट करा गया, तो मेरी प्रोडक्शन को बंद कर दिया जाएगा, और मुझे जेल भी हो सकती है, पेनल्टी भी हो सकती है। तो बिजनेस स्टार्ट होने से पहले ही बिजनेस के फेल होने की संभावना हो जाती है। नाउ ये सारे निर्णय क्यों लेने चाहिए, क्यों उसकी समझ होनी चाहिए? इसलिए क्योंकि हम बिजनेस को मान के चलते हैं कि एक रिस्क ओरिएंटेड करियर ऑप्शन है। रिस्क को मिनिमाइज करना, रिस्क कभी जीरो नहीं किया जा सकता, रिस्क को मिनिमाइज करना, यही एक उपयुक्त एंटरप्रेन्योर की पहचान है। हर व्यक्ति एक रिस्क के डोमेन में ही काम कर रहा है, कोई भी एंटरप्रेन्योर हो, माइक्रो हो चाहे वो एमएनसी लेवल से तक हो, बट हाउ टू मिनिमाइज दैट रिस्क, हाउ टू बी कंट्रोल दैट रिस्क, so that in a risk situation you also be able to be there is a possibility of succeed and success.
ये कोशिश कर रहती है। सो ये फर्स्ट लेवल ऑफ फिल्ट्रेशन मैं कर चुका हूं। अब हम जाते हैं, जब यहां से जो आइडिया बचते हैं उनको मैं नेक्स्ट लेवल ऑफ फिल्ट्रेशन पे लेके जा रहा हूं। नेक्स्ट लेवल ऑफ फिल्ट्रेशन क्या है, which we call the check 2, प्रेफरेंस। जो बिजनेस में करने जा रहा हूं, क्या वो मेरी प्रेफरेंस में है? अगर वो मेरी प्रेफरेंस में है, जैसे मैं खाना बहुत अच्छा बना सकता हूं, तो रेस्टोरेंट खोलना मेरी प्रेफरेंस में है। और इसके अलावा कोई बिजनेस अगर मुझे करने को कहा जाएगा, भले ही वो कितना भी प्रॉफिटेबल हो, लेकिन मेरा मन जो है वो उसमें नहीं लगेगा। सो this is sometime it's a personal choice that you want to do a business which is actually very close to your heart, right? बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि अपनी किसी पर्सनल व्यक्तिगत समस्या से या किसी अनुभव की वजह से वो एक पर्टिकुलर डोमेन पे बिजनेस करना चाहते हैं। जैसे वुमेन सेफ्टी डिवाइस बनाने का किसी को पैशन आया, क्यों आया? बेटियां होंगी, उसे फील हुआ होगा कि नहीं ऐसा होना चाहिए। So sometime it's a preference. Then what it social and economical status, इसकी ये भी वजह हो सकती है। नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ये 4 चीजों पे मैंने और फिल्टर अप्लाई करा और यहां से मेरे पास कुछ और रिजल्ट निकल कर आया, कुछ और फिल्टर होकर के मेरे पास बिजनेस आइडियाज निकल कर आए। सो वी स्टार्टेड विद 15 or 20 business ideas, now come to the 10 business ideas. Now we are going to be doing a third level of filtration. In this third level of filtration, we look at the financial requirement. Now what's financial requirement means? One side was in a capital, other is in financial requirement. Operation cost manage हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, क्या मुझे बैंक्स उतना सपोर्ट कर देगा, क्या मेरे पास उतना अरेंजमेंट हो गया है चलाने के लिए। Then required human skills and raw materials, whether I'm getting the local using the local raw material which is available in nearby, or I have to be transport that business raw material from Chennai, from Ahmedabad, from Bangalore, from some other portion of this country. अभी अगर कोविड में ऐसा सिचुएशन आ जाए तो क्या होगा कि वो एक हाई रिस्क बिजनेस की तरफ चला जाएगा। Then human skills, demand means whether I have a requisite demand. First demand, पहले क्वार्टर की डिमांड इतनी है कि मैं अपने बीईपी पे पहुंच रहा हूं या नहीं, और क्लोज टू ब्रेक इवन पॉइंट पहुंच रहा हूं कि नहीं, मार्केट पोजीशनिंग क्या होगी इसकी, राइट? उसके लिए मेरे पास बजट है या नहीं। अगर आपने मार्केटिंग पे सेशन यहाँ हुआ होगा तो आपने पढ़ा होगा यहाँ पे 4 P's होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, पोजीशनिंग, राइट, एंड पीपल। सो ये जो पोजीशनिंग है प्रोडक्ट की, वो किस सेगमेंट के लिए है। थर्ड इज ना मशीन, whether I have machines available indigenous or I have to procure from outside. Technology, infrastructure, whether I have a sufficient number of sufficient infrastructure for manufacturing that particular product. अगर मुझे एक शर्ट बनाने की यूनिट लगाना है मुरादाबाद में, तो मेरे पास उसके लिए मशीन्स अवेलेबल है, लेकिन मेरे पास इंफ्रा नहीं है। इंफ्रा कहाँ पर है मेरे पास? इनका मेरे पास गांव में किसी रूरल एरियाज में है, मुरादाबाद के और डीपर एरियाज में, तो क्या मैं वहां लगा सकता हूँ? ये एक निर्णय लेने का डिसीजन मतलब समय है, जहां पर आपको ये तय करना पड़ेगा कि अगर मैं मेरी यूनिट, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मेरा रिमोट लोकेशन पे हो और मेरा ऑफिस जो है वो सिटी में हो, तो क्या इस तरीके से मैनेज हो सकता है कि नहीं। तो ये कुछ और फिल्टरेशन है, ये कुछ और कैलकुलेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है। एंड देन लास्ट वन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉल द गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है आज की डेट में? अगर मैं बात करूं, सो अगर कोई बोले कि मैं जो है वो राइस मिल लगाना चाहता हूं, तो शायद उसको इतना प्रमोशन नहीं मिलेगा। लेकिन कोई ये कहे कि मैं हैंडीक्राफ्ट बनाने का कोई काम करना चाहता हूं, मैं टॉय बनाने का काम करना चाहता हूं, या मैं वुमेन सेफ्टी डिवाइस बनाना चाहता हूं, मैं ऐसा कोई यूनिट लगाना चाहता हूं जिससे कि, या टेक्नोलॉजी बिल्ड आउट करना चाहता हूं जिससे कि एग्रीकल्चर डोमेन में इनकम डबल हो जाएगा। मैं आपको और बोली कि जो हमारे बिलो पॉवर्टी ऑफ लाइन में लोग बैठे हुए हैं, उनका कैसे लाइवलीहुड कैसे अपलिफ्ट कैसे किया जाए। सो सोशल इंटरप्राइजिंग की बात होने लगी है। अगर मैं कुछ उन प्रॉम सेक्टर की बात करूं, तो शायद मुझे बहुत जल्दी प्रमोशन मिलेगा। इनफैक्ट बहुत सारी और स्कीम्स जो स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, जो आपको पुश करती हैं कि आप पर्टिकुलर डायमेंशन में जाएं। साइबर सिक्योरिटी जैसी टेक्नोलॉजीज पे बात करूं, एजुकेशन टेक की बात करूं, कोविड रिलेटेड किसी प्रोडक्ट को बनाने की बात करूं, तो शायद मुझे ज्यादा प्रमोशन मिलेगा।
ई व्हीकल्स की बात करूं तो मुझे ज्यादा प्रमोशन मिलेगा. सो वी नीड टू बी थिंक अबाउट कंसिडरिंग द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑल्सो. कई बार हमें क्या लगता है कि हम अभी आज आप देखिए पोल्यूशन की वजह से क्रैकर इंडस्ट्री बहुत डैमेज हुई है. सो कोई व्यक्ति अगर ये सोचता है कि मैं क्रैकर्स इंडस्ट्री लगाना चाहूंगा, तो क्या वो लगा पाएगा? क्या गवर्नमेंट प्रमोट करेगी? क्या बैंक प्रमोट करेगा? क्या उसे आसानी से लोन मिल जाएगा? क्या उसे आसानी से अप्रूवल मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे. सो इन सब चीजों को, पहलुओं को भी आपको देखने की जरूरत है, ताकि आपके चांसेस ऑफ सक्सेस जो हैं वो ज्यादा बेहतर हों. चलिए, नाउ in a layman language, the business idea generated out of the problems, right? So problems, when we sense the problems के एक नीड निकल कर आता है, नीड से बिजनेस आइडिया में जाते हैं, और बिजनेस आइडिया मोटिवेट ए पर्सन with their own capacity, whether go for industry, whether go for manufacturing, whether go for service of that industry, whether go for only trading, right? So मैंने चार्ट बनाया, एक डायग्राम बनाया आपकी समझने के लिए. Look at the left side, you have n number of problems, right? And if you start writing the problems in your daily routine life, this is the best way of generating the business ideas. If you start writing the problems, you have n number of problems, and each problem could be solved by the n number of manners, right? So एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के n तरीके हो सकते हैं, right? And अगर यहाँ से आपको बोलूं कि लेट्स से कि यहाँ के एग्जांपल के हिसाब से मैंने प्रॉब्लम 2 को आइडेंटिफाई किया, मुझे लगा कि मेरे प्रॉब्लम 2 जो है वो मेरे लिए ज्यादा सुटेबल, मैं उस पर काम कर सकता हूँ, मेरे पास स्किल सेट है, मैन पावर है, पैसे हैं, राइट? मुझे लगता है गवर्नमेंट उसको प्रमोट करेगी, नीड है कंट्री की, सोशल इनोवेशन इंजीनियरिंग में जा रहा हूँ, सोशल इनोवेशन की इंटरप्राइजिंग के टर्म्स में जा रहा हूँ. सो मैंने प्रॉब्लम 2 को आइडेंटिफाई किया. प्रॉब्लम 2 को आइडेंटिफाई करने के बाद मेरे पास 1 से लेकर n सॉल्यूशंस थे, एंड उन n सॉल्यूशंस में से मैंने सॉल्यूशन नंबर 3 को सेलेक्ट किया कि यार सॉल्यूशन 3 जो है वो ज्यादा सुटेबल है मेरी जियोग्राफिकल के हिसाब से, मेरे यूजर के हिसाब से, मेरे कस्टमर के हिसाब से, और मैंने उसको बिल्ड आउट करना स्टार्ट किया. सो दैट solution 3 is actually the business idea. That solution 3 actually is a product and service which I am providing to my to the people who are actually feeling suffering with that problem, pain, right? So solution, actually business idea is a solution of someone's problem, right? All right, कुछ समझने की कोशिश करते हैं. प्रॉब्लम, नीड एंड बिजनेस आइडियाज, राइट? यहां पे मैं आपका पार्टिसिपेशन चाहूंगा. अगर प्रॉब्लम हंगर है तो नीड क्या होगी? देन व्हाट इज द नीड? इफ द प्रॉब्लम इज हंगर, hungerness is a problem, then what is the need? Food, sir. Food, right? So what could be the business ideas around it? Eating outlet, restaurant. Restaurant, eating outlet. Restaurant, food outlet. Food outlets, or टिफिन सर्विस भी हो सकता है. Very good. We are very good. Dhabas. ढाबास. इनफैक्ट टेक्नोलॉजी की टर्म एडवांस्ड में बात करूंगा सलीम साहब, तो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग. जी जी सर. कोई और कुछ कह रहा था, शायद सुन नहीं पाया. चलिए, इफ द प्रॉब्लम इज हीट, देन सॉल्यूशन नीड इज कूलिंग इक्विपमेंट्स. Ventilations. Right. And if the ventilation is need, what devices we need? What business idea around we can build that? AC, cooler fan, exhaust fan, right? Battery operated fan, table fan, right? Manual operated fan, mechanical fan. राजा महाराजाओं के समय में भी ये समस्या थी, तो वहां के एक सोल्यूशन था, वो पंखा चलाने वाला बैठा रहता था, राइट? चलिए और कुछ करते हैं. प्रॉब्लम इज रेल एक्सीडेंट. What is the need? Proper mechanism, sir.
सेफ्टी डिवाइसेस, Safety device. राइट। अभी मेरे कनेक्शन में एक लखनऊ से एक व्यक्ति आए, और जब उनका प्रॉब्लम देखिए कितना बढ़िया है और सॉल्यूशन कितना बढ़िया उन्होंने निकाला है। आपने देखा होगा ट्रेन्स में एक चैन पुलिंग का कॉन्सेप्ट रहता है ना। तो जब आप कोई भी व्यक्ति चैन पुल करता है ट्रेन्स के अंदर, तो क्या होता है कि कोच के बाहर एक ना रीसेट बटन होता है, मतलब रीसेट सेगमेंट होता है, डिवाइस लगी होती है, और इसीलिए वो व्यक्ति जो है वो इधर ना इंजन से या फिर बैकयार्ड से व्यक्ति निकल कर आता है और उसको डिवाइस को रीसेट करता है। जब वो रीसेट करता है तो वो ब्रेक रिलीज होते हैं, देन ट्रेन आगे बढ़ती है। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार सडनली ट्रेन बीच रास्ते में कहीं पर रुक जाती है और फिर एक समय लगता है। अगर ये ट्रेन पुलिंग किसी ने लेट्स से कि गजरोला के ये गढ़ के ब्रिज पे कर दिया है, नाउ आप सोचिए कि ये कितना बड़ा एक रिस्क है उस व्यक्ति के लिए कि वो आए और इसको रीसेट करे। सो यहाँ पे जो इनोवेशन है वो भी एक लखनऊ से एक व्यक्ति ने डेवलप किया है। दे हैव कन्वर्टेड यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ वॉल्स, राइट, जिसमें कि रीसेट ऑपरेशन जो है वो कोच के अंदर से किया जा सकता है, आपको बाहर उतरने की जरूरत नहीं है। गेटिंग द पॉइंट सर? And they have well tested it. So we need to be think about the problem, move towards a need, and then think about solution. Solution एक नहीं हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। इसीलिए आप देखिए कि एक ही मार्केट स्पेस में, एजुकेशन मार्केट स्पेस में कितने सारे एडटेक स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, स्कूल्स काम कर रहे हैं, प्राइमरी एजुकेशन सेगमेंट्स काम कर रहा है, स्किलिंग डेवलपमेंट सेगमेंट काम कर रहा है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन अलग काम कर रहे हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन अलग काम कर रहे हैं, बिहेवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन अलग काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन अलग काम कर रहे हैं। सो हर एक व्यक्ति की का एक प्रॉपर ना कंसिडरेबल सेगमेंट्स है जिसपे वो फोकस कर रहे हैं। चलिए, प्रॉब्लम इज ट्रैफिक, कोई और आंसर करेगा एक्सेप्ट द सलीम साहब? If the problem is traffic, what could be the need? क्या हो सकता है? Safety instruments. Proper signal system. Oh, yes, signal systems. Very good. Traffic control systems. Right. Now, what could be the business idea around it? Safety instruments. Safety traffic के लिए वो रोड एक्सीडेंट में आ जाएगा। Vedang, you got my point? If I talk about problem is road accident, then we require the safety instruments, and a quality helmet, right? Making of red lights. हाँ, red light, very good. और क्या हो सकता है? आपने ट्रैफिक कैमरास। हाँ ठीक है, वेरी गुड। आप एक वो यूज करते हैं, क्या नाम से, गूगल का क्या यूज करते हैं हम लोग? गूगल मैप। सर गूगल मैप। Yes, Google Map क्या करता है? That Google Map help us. Yes. Now, can we build out another solution कि भैया आदमी बाइक चला रहा है, उसे तो नहीं पता ना आगे ट्रैफिक है ना? मॉर्निंग में रेडियो पे एक प्रोग्राम्स आते हैं, जो भी आते हैं वो ट्रैफिक रिपोर्ट देते हैं, पता है आपको? Yes sir. है ना? वो क्या बताते हैं कि आप फलानी रोड से जाएंगे, XYZ रोड से जाएंगे तो वहां पे ट्रैफिक है, स्लो ट्रैफिक है, हैवी ट्रैफिक है, नॉर्मल है, वो बताते हैं आपको, जिसको अगर आप रेडियो सुन रहे हैं तो आपको पता चल सकता है कि उधर से जाना सही नहीं है। नाउ बहुत पहले, मतलब मैं एक सोल्यूशन पे काम कर रहा था, और सोल्यूशन क्या था ये देखिए। लेट्स से कि आपको अगर 5 किलोमीटर पहले एक ना आगे रोड पे अगर लेट्स से ट्रैफिक है और आपको 5 किलोमीटर अहेड बिफोर आपको कोई इंटीमेट कर दे कि टेक अनदर रोड बिकॉज देयर इज अ हेवी ट्रैफिक, सिर्फ इतना डिस्प्ले कर दे रोड साइड में। सो जिसके पास भी ये ना स्मार्ट डिवाइस नहीं है या वो उस समय यूज नहीं कर सकता है, सो वो भी इजिली पता ट्रैफिक को अवॉइड कर सकता है, राइट? सो we need some displays in a certain point of time, जहां पे जो कि हमारे सैटेलाइट से कनेक्शंस कनेक्टेड हो या मैप के थ्रू कनेक्टेड हो, जो सिर्फ ट्रैफिक की सिचुएशंस को डिस्प्ले कर दें। जैसे हम ये बताते हैं कि आज टेम्परेचर मुरादाबाद में इतना है ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना है, इस तरीके से ट्रैफिक की सिचुएशन को ही बताया जा सकता है। और शायद
लोगों को डाइवर्ट किया जा सकता है अदर रूट्स पे। ऑलराइट, अनस्किल्ड मैन पावर इज अ प्रॉब्लम। व्हाट इज द नीड? द नीड इज some training. For that, we need the training centers, skill development centers, institutions like you, prototyping development center like you, incubation center like you. Problem is unemployment. What's the need? Need the incubation centers, startup center, entrepreneurship cells, जो कि बच्चों को गाइड करें, हेल्प करें, सिर्फ कॉलेज के नहीं, बाहर के लोगों को भी। Right now, problem is COVID. Problem is Omicron. What is the need? We need medicine, we need vaccination, we need safety devices, we need safety equipments, right? और हमने इसी प्रोग्राम में जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हम लोगों ने देखा कि कैसे सिर्फ एक मास्क के लिए कितने सारे अरेंजमेंट्स, इक्विपमेंट्स करे जा सकते हैं। इनफैक्ट अगर अभी आज के आप देख रहे होंगे कि पीट्रॉन है या फिर बॉट है या फिर ईयरबड्स आपके जो यूज कर रहे हैं, आप हैंड फ्री डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, वो डिवाइसेस भी मास्क के साथ कनेक्ट करी जा सकती हैं। एंड क्या एक और चीज आपको बोल रहा हूं, अभी यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेशन आपके बीच में छोड़ के जा रहा हूं। बच्चे जो अभी स्कूल जाना स्टार्ट करेंगे या जो अभी नहीं जा पा रहे हैं, अभी इनफैक्ट 12 साल से 15 साल के लिए भी वैक्सीन आने की बात हो रही है मार्च में, लेकिन फिर भी पेरेंट्स के लिए एक सेफ्टी डिवाइसेस वो चाहते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो बच्चों के लिए फ्रॉम द एज ऑफ above 4-5 years to 12 years and 15 years, क्या उनके लिए डिफरेंट तरीके का मार्क्स नहीं होना चाहिए? क्या उनकी नीड डिफरेंट नहीं होगी? Think about it. All right. Now, what are the sources of business ideas? So they are the personal sources, means treat family as a customer, treat your mother as a customer. When she's working in a kitchen, ask her, mama, आपको किचन में काम करते हुए क्या दिक्कत होती है? Right? तो मम्मा ने ही, किसी की मम्मा ने बताया होगा कि बेटा बहुत गर्मी हो जाती है ना, अभी एक तो गर्मी है जो मई जून में, और जैसे ही मैंने तड़का लगाया तो पूरे घर में जो है, तो किसी ने एग्जॉस्ट फैन बिल्ट आउट किया होगा, किसी ने वो चिमनी बिल्ट आउट करी है। तो ट्रीट फैमिली एज ए कस्टमर, आस्क फैमिली कि आपको क्या समस्या आती है जब आप काम करते हो। फ्रेंड्स एज ए कस्टमर, कलीग एज ए कस्टमर, सेल्समैन एज ए कस्टमर, राइट? पर्सनल फॉर्मर सोर्सेस, बैंक, इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, कंसल्टेंट्स, इनसे भी आप बात कर सकते हैं। बैंक से बात कर सकते हैं कि सर किस तरीके की एंटरप्राइज लगाना है, क्योंकि बैंकर्स के पास अनुभव रहता है, वो काम करते रहते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। इंडस्ट्री से बात कर सकते हैं, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में के पास भी इनफैक्ट एक बुकलेट होती है, पूरा इंडस्ट्री का डेटाबेस होता है जिससे आप पता कर सकते हैं। कुछ कंसल्टेंट्स जो इस डोमेन में काम कर रहे हैं, जिन्हें इंडस्ट्री के गैप्स पता है, उनसे आप बात कर सकते हैं, उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ एक मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं और चैलेंजेस और गैप्स पे सिर्फ बात कर सकते हैं। सो इंडिया इज अ कंट्री विच इज फुल ऑफ प्रॉब्लम, एंड आई से कि ये यंग जनरेशन जो आज यहाँ पर है, जिसके पास टेक्नोलॉजी इजी अवेलेबल है, कम्युनिकेशन इजी अवेलेबल है, डिलीवरी इजी अवेलेबल है, राइट ना, लर्निंग सोर्सेज इजी अवेलेबल है। सो अगर वो लोग आज हमारी समस्याओं को समझने का सिर्फ प्रयास करें, इग्नोरेंस का प्रयास, मतलब इग्नोरेंस बंद करके सिर्फ उसको ध्यान देने का प्रयास करें, शायद तो बहुत सारे इनोवेशंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया जा सकता है बाय वे ऑफ एस्टैब्लिशिंग द स्टार्टअप्स, राइट? मैगजीन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फाइंडर, मैगजीन से बहुत सारे आइडियाज निकल कर आते हैं। अभी ईवी व्हीकल्स में उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए पैकेजिंग मटेरियल बिल्ट आउट किया गया, डेवलप किया जा रहा है, जो कि ईवी व्हीकल्स की बैटरीज को प्रिक्योर, मतलब उसको सस्टेन रखने में काम करेंगे, उसको वेस्ट उसका कंट्रोल करेंगे और उससे उसकी लाइफ बढ़ेगी। कितना बढ़िया चीज है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फाइंडर्स, राइट? बहुत सारे ये कॉफी टेबल बुक इंडस्ट्री पब्लिश करती है, जिसको रीड आउट करेंगे तो आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशंस और प्रॉब्लम्स को पता चलेगा, बिजनेस आइडियाज का निकलने का चांसेस है। बुक्स है, न्यूज़लेटर्स है, न्यूज़पेपर्स है, कैटलॉग्स हैं, बहुत सारी और चीजें हैं, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है। इंटरपर्सनल सोर्सेज क्या है? ट्रेड शो दिल्ली में होता है, या फिर एग्जीबिशन जो आपके यहाँ पे शहर में हो रही हैं इंडस्ट्री से, या फिर स्कूल की या किसी और तरीके की, आप वहां पार्टिसिपेट करें, आपको बहुत सारे चीज। मैं आपको अपना उदाहरण देता हूँ।
वी डू ना, जैसे आपने अभी ना टीएमयू ने एफडीपी प्रोग्राम ऑनलाइन किया था, तो हम लोग लंबे समय से एंटरप्रेन्योरशिप डोमेन में फिजिकल मोड में एफडीपी प्रोग्राम्स करते हैं। और उस फिजिकल मोड प्रोग्राम्स में आई वाज डूइंग ए प्रोग्राम इन 2017 at MGP Rolkan University. Now, because it's a government college, government university, so training, अगर आप देखें हमारे कलीग समझें इसको, आपने देखा होगा ट्रेनिंग जो है एक जॉय का विषय है। जॉय मतलब लर्निंग इज सेकेंडरी, द रिलैक्स, कंफर्ट एंड साइट सीन व्यू और ये सारा इंटरेक्शन मिलना जुलना, ये हमारी हाई प्रायोरिटी पे रहता है लर्नर्स की। अगर मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम गाजियाबाद में करूंगा तो शायद कोई नहीं आना चाहेगा, लेकिन मैं वही ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर नैनीताल में करूं, गोवा में करूं, तो शायद बहुत सारे लोग आएंगे विद फैमिली। सो ये एक अनुभव देखा गया है यहाँ पे। सो हुआ ये कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो कि रॉयल यूनिवर्सिटी में चल रहा था, सो वी हैव अराउंड 87 पीपल रजिस्टर्ड इन दिस प्रोग्राम। सो हमने फिल्टर आउट करके 45 के आसपास हम लेकर के आए। In this 45, what happening during the classes, the strength is 28-30, but during the lunch time, the strength exceeded to the 50, 55, 60. Now, because it's a government sponsored program, I have a limited budget in it, right? And I can't restrict anyone, right? We tried to be manage it by the way of coupons and all for the lunch, but मुझे तब भी वो solution बहुत बेहतर नहीं लगा. And that was a point where I feel a pain about how and thinking about कि कैसा मशीन एक बॉट होना चाहिए, मैं जिसको भी एक RFID बेस या QR कोड बेस एक कूपन दूंगा, सिर्फ वही उस प्लेट को एक्सेस कर पाए। सो वो मशीन से डील होगा, टेक्नोलॉजी से ही आप जो है बिहेवियर और करप्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी के इस प्रॉब्लम्स पे ही मैंने एक सोल्यूशन बिल्ट आउट किया जिसका नाम था प्लेट डिस्पेंसिंग मशीन। उसको पेटेंट भी मैंने कराया। और ये प्लेट डिस्पेंसिंग मशीन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही है कि एक स्टैक है जिसमें प्लेट जो है स्टोर्ड है और ओनली ऑथेंटिकेटेड पर्सन कैन गेट द प्लेट, एंड उसमें उसके लिए किसी को कोई भी हेजिटेशन नहीं है इसमें। इनफैक्ट हमने इसको जो ये कैटरर्स हैं इनके साथ भी, होटल्स में भी इसके लिए बात करा। सो वी हैव अ वंडरफुल रिस्पांस इन इट। ऑलराइट, सो ये मेरा पर्सनल अनुभव है, आप इसको ट्राई करिए, आपको और बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिलेंगे। नाउ और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स मतलब बिजनेस आइडियाज को आइडेंटिफाई करने के तरीके हो सकते हैं, एंड दैट आर अनलिमिटेड, इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, राइट? सो नाउ क्लोजिंग दिस प्रेजेंटेशन फॉर द नाउ टाइमिंग, नाउ आई विश कि आप अपना एक पिच डेक बनाएं। पिच डेक क्या होता है? मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है, मैंने उसको फिल्टर कर लिया है, सब कुछ है, सब कुछ फिट एंड फाइनल हो चुका है, अब मुझे लोगों को प्रेजेंट करना है, राइट? सो लोगों को मैं कैसे प्रेजेंट करूंगा? जब मैं उनसे मिलने जाऊंगा, और एक कॉमन भाषा में हम इसको पिच बोलते हैं। ये एक्चुअल में स्टार्टअप्स डोमेन का एक फिनोमिना है। और यहाँ पे जब भी आपसे कोई मिलेगा, व्यक्ति मिलेगा, तो वो आपसे जरूर पूछेगा कि अच्छा ठीक है, मुझे पिच डेक आप शेयर करना, राइट? सो आप कैसे बताएंगे कि आप क्या कर रहे हैं? हाउ यू एक्चुअली इलैबोरेट, एक्सप्लेन योर बिजनेस आइडिया, राइट? सो फॉर दैट यू नीड पिच डेक। जैसे कि अभी मैंने आपसे बोला, और इस प्रोग्राम में जहां अभी हम बैठे हैं, यहाँ पे हम पिच का इस्तेमाल करेंगे, और आप सब लोग, सबके लिए एक असाइनमेंट मैं दे रहा हूँ, क्योंकि इस साइलेंट और शांत बैठ करके हम इस प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। सो मैं आपके साथ एक पिच कंपटीशन कर रहा हूं, और ये पिच कंपटीशन जिसमें कि आप सबको अपने अपने बिजनेस आइडियाज को सोच करके, जो भी आपने सोचा, या फिर जो मैंने एक चैलेंज दिया है, और वो चैलेंज है कि गोलगप्पा वेंडर्स का इनकम डबल करना है। Bring your so problem statement freeze. Now you have to write the solution. You have to explain the technology designs, right? You have to explain the team and कैसे बनाओगे, कैसे करोगे, ये सारी चीजों पे बात करेंगे।
So now this is an actually pitch competition. और pitch बनाओगे कैसे आप, इसके लिए ये एक पर्टिकुलर मैं आपको 30-35 मिनट लूंगा, और इसमें और ये जो प्रेजेंटेशन मैं शेयर भी करूंगा पंकज जी से। पंकज जी आप सबको शेयर करेंगे और आप सब लोग अपना अपना पिच डिजाइन करके प्रेजेंट करेंगे। पंकज जी, इज दिस ओके? Yes, sir. Yes, sir. It's okay. राइट, Absolutely okay. ठीक है। सो पिच एक्चुअली, presentation and pitch both are a different thing. Presentation means I'm presenting the things, whether you take interest or not, that is your entirely outlay. But in a pitch, we wish we try to be bring the listener in the center, right? And when we try to bring the listener in the center, we are more emphasize क्यों pitch कर क्यों नहीं समझिए। पिच इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें नेक्स्ट कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन का विंडो ओपन करना है। And by and large, we pitch this to investor, we pitch this to incubators, we pitch our ideas to our first person who are going to be help us, or the organization who are going to help us, either it's an incubator, either angel investor, well VC और जो भी है, या मेरे अपने कलीग्स हैं, मेरे अपने को-फाउंडर्स हैं, मेरी अपनी टीम है, जिसके अदरवाइज अगर वो नहीं इंटरेस्टिंग है तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, राइट? सो यहाँ पे पिच डेक जो है ये कई सारे तरीकों की होती है, और इसमें से जैसे पहली है उसको बोलते हैं द ट्विटर पिच, राइट? सेकेंड वन इज कॉल्ड द एलिवेटर पिच, third is called the competition pitch, and fourth is called the investor pitch, right? Pitch deck is a different, and then a separate document which you call the business plan, which is a different portion, right? It depends upon time, it depends upon situation, it depends upon how much now your investor, your listener is okay with you to be listen your concepts, you listen your idea, you use either Twitter page, or it's an elevator pitch, or it's competition, or an investor pitch, right? Now the first one, which you call the Twitter pitch. What is Twitter pitch? This summarize your whole idea in one punchy sentence. सिर्फ एक sentence में you explain your idea only with the one sentence, right? Like an example, let's say अगर मैं ये बोलूं कि I'm the next Twitter of India, right? And if I ask you who is the next, which company is the next Twitter of India, then what do you say? Which company is next Twitter of India? Is it Twitter of India? चलिए मैं आपको कुछ हिंट दे रहा हूं। अभी एक मैच सीरीज चल रही थी, वनडे सीरीज चल रही थी, उसमें स्कोर आता था, है ना? सो एक बर्ड बन के आती थी, क्या लिखा होता था वहां पे? बस ऐसे तो बात नहीं बनेगी। लिखा था Sir, maybe it is sky. नहीं, next Twitter of India, a company, Indian company, which is building a Twitter-like platform. Very simple. What's his name? Byju's. Byju is a edtech startup, एजुकेशन डोमेन का स्टार्टअप है। के से नाम है। चलिए ये आपके लिए असाइनमेंट है। All right, so I simply say I'm the next Twitter of India. So you understand, I'm the next Facebook of India. I'm the next Facebook. I'm the next Byju's of from Muradabad. Yes, a sentence describe my idea.
right? All right. जैसे Airbnb को वो कहता है, I'm the next Airbnb of India. It's in a sentence you explain what you are going to do, what are you doing actually. Now second is called the elevator pitch. Elevator pitch, actually the word himself describe that आप किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी मीटिंग में, किसी पोजीशन पे है, कहीं गए हुए हैं और आपको एक इन्वेस्टर दिखता है या कोई व्यक्ति मिलता है जो कि लिफ्ट में एलिवेटर पे आपके साथ है, कितने सेकंड्स के लिए, मिनट्स के लिए. सो आप जो है बस उस सेकंड्स और उस मिनट्स में अपनी बात को कहना चाहते हैं. एंड इसमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, इसको बताने के लिए इस कॉन्सेप्ट को नाम रखा गया एलिवेटर पिच. क्या है समझ लेते हैं. शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ योर कंपनी should last as long as elevator ride. 15 से कम 30 सेकंड्स के बीच का ड्यूरेशन है आपके पास, राइट? क्या बोलना है उसको? Define the goal of your pitch, right? Explain briefly but clearly what you do. Briefly बताने की क्या आप कर रहे हो. Communicate your USP. Engage the listener with one good question. क्यों ऐसा क्यों है? लिसनर को एंगेज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपने नेक्स्ट कम्युनिकेशन का विंडो ओपन नहीं किया तो आपको पिच करने से कोई फायदा नहीं होगा, राइट? सो आप इसको बोल सकते हैं कि ना व्हाट यू डू एक्चुअली, अपना गोल बताइए, अपने ना डिस्क्राइब करिए इंटायर मॉडल को, देन अपना कुछ यूएस बताइए, कुछ अचीवमेंट्स बताइए. And then, sir, thanks for your, when I can call you back and can I meet you anytime when you're free. कुछ भी ऐसा क्वेश्चन लास्ट में जो कि एक अगले एंगेजमेंट का कॉल ओपन करते हैं. चलिए, अच्छा मेरे पास एग्जांपल पड़ा हुआ है इसमें. गुड. साउंड आ रहा है आपके पास? आवाज आ रही है? The commercial nerve center of India. Yes, sir. Audible. Right. A city where dreams do come true. The billionaire hub. The millionaire's playground. This is the land of enterprise. This island, home to over 20 million people, has the uncanny ability to make you stand out in a crowd. Only if you have it in you. This is the pitch. Over the last 2 years, we've connected some of India's brightest minds with young entrepreneurs to help realize their big dreams. This year, the pitch returns with a new face, reflecting the changing face of entrepreneurship in India. Out of the several entries received from across the country, only one of them will walk away with a seed fund of 5 crore rupees. But it's not going to be a cakewalk. Judging them are some of India's sharpest new age business icons, masters of the digital space. From being a college dropout today, he is a millionaire with a pile of cash to lend. Mahesh Murthy decides the fate of many entrepreneurs in his new avatar as investor and mentor. Mahesh started in TV and earned his spurs when he changed the face of Channel V. From there, with the finger on the pulse of New India, was a pioneer in social media. His company Pinstorm is now one of the world's leading pay-for-performance marketing firms. Now as partner at Seed Fund, Mahesh is using an eagle eye to spot the next big idea. He believes that no one knows anything. You can discover your own rules and create your own playing field. We're looking for people who can create a dominant business in a dominant sector. For that, you have to pick a sector early, pick a space early before somebody else gets into it. You have to have the brains, the backbone to be able to build a team and make and win in that sector. I'm looking for people like that. From being a gaming addict to becoming the gaming king, Vishal Gondal turned his passion into a multi-million-dollar business. He stepped into the world of video games at the young age of 13
and started a computer learning institute in his father's garage at 16. From there, it was no turning back. The mind behind India Games, Vishal, is living his dream. This is my third season at the pitch. The show is becoming bigger every year. The king, third-party systems. All right. You have time for people. My interest is to be sure directly pitch. एक प्रोग्राम है द पिच रिलायंस इंश्योरेंस का, और जितने की बहुत पॉपुलर हैं, अभी फंड रेज किया है, कल की न्यूज़ है ये। सो मैं डायरेक्टली आपको लेके जाना चाहूंगा जहां पे एक पिचिंग सेशन हो रहा है। Ideas have been shortlisted. How a person actually pitch. Of these 25, 10 applicants will be selected for an opportunity of a lifetime based on their pitch. It is their one chance to get seed funding of 5 crore rupees and take their dream to the next level. For now, all they have to do is impress the jury in just a minute. You have 1 minute to present to us your business idea. Let's start now. First up, the first forex trader from Mehboob-Nagar now needs some extra bucks to take this venture to the next level. I belong to a small town called Mehboob-Nagar. It's 80 kilometers south Hyderabad. It's actually famous for the diamond Kohinoor. you're the first software company from Mehboob-Nagar. Yes, first and the only one. You have 1 minute to present to us your business idea. Present to you Money Messenger. Money Messenger is an trading application for the traders of the forex market. Communication is an integral part of the whole trading activity. We feel that it should also be the integral part of the trading application as well. Since it's not right now, the traders are using several legacy systems like Yahoo, Jirac, and Sky. They're also using many, third-party systems like SMS gateways, email systems, and instant messengers to broadcast their alerts and communicate with fellow traders, analysts, and stuff. And in this process, they are losing the sight of the market. They have problems signing in and signing out, switching between the applications. And since this is a very serious business, we feel that trader's main concentration should be the market. So we design an application which will not change the way what traders are doing now. It will simplify the whole process. The trader will. So your time is over. What's the big deal? The big deal. All right. So you can see that how a person is actually presenting their idea and what time investor or mentor give to be assess it. All right. The second and third one is called a competition pitch. यहाँ पे आपके पास 3 से 5 मिनट का समय रहता है और यहाँ पर आपको फाइनेंशियल प्लान बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक मोटा-मोटा आपको बिजनेस आइडिया प्रेजेंट करना है और कोशिश करनी है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उनसे अट्रैक्ट कर पाओ, उनको कैच कर पाओ और उनकी आइज टू आइज के साथ अपनी बात रख के आंसर दे पाए उनको। थर्ड वन विच इज कॉल्ड द इन्वेस्टर पिच, जो कि सबसे ज्यादा सीरियस पिच मानी जाती है। और यहाँ पे आप के पास आपको डिफाइन करना है कि यूनिकनेस जो आप बिल्ट आउट कर रहे हैं अपने प्रॉब्लम में वो क्या है, आपके पास ट्रैक्शन क्या है। ट्रैक्शन मतलब क्या अभी बिजनेस में कोई कुछ पैसे ऐसे कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, ऐसा कुछ है, तो ये चीज आपको बतानी, क्योंकि इन्वेस्टर ये देखना चाहता है कि आपके बिजनेस में अभी पेड कस्टमर है या नहीं, या सिर्फ अभी एक आइडिया है और आइडिया अभी मार्केट में पहुंचा भी नहीं है। सो यहाँ फोकस करना है कि आप जो है वो अपने इंटायर बिजनेस को प्रॉब्लम सोल्यूशन से लेकर के अपनी टीम स्ट्रेंथ और उसकी टेक्नोलॉजी, उसमें पेटेंट्स क्या फाइल किया है, उसके अचीवमेंट्स क्या है, उसमें ट्रैक्शन क्या है, कस्टमर कितना है, कस्टमर रिपीटेटिव कस्टमर कितना है, ये सारी चीजें बहुत अट्रैक्ट करती हैं इन्वेस्टर को। 10 से 12 स्लाइड 15 स्लाइड के अंदर ये खत्म हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ऑलराइट, एक टिपिकल बिजनेस पिचिंग में की प्रेजेंटेशन में आपके पास क्या क्या होता है ये देख लीजिए। प्रॉब्लम सोल्यूशन, प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन क्या है, प्रोडक्ट क्या है, टोटल मार्केट साइज क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है। बिजनेस मॉडल का मतलब क्या है कि आप कैसे इसको सोल्ड आउट कैसे कर रहे हैं, राइट, रेवेन्यू पैसे कैसे कमा रहे हैं इसमें। अंडरलाइन कोई स्पेशल चीजें हैं जो इसमें जो यूएसपी बनाती हैं, वो कंपटीशन किसका और भी कोई प्लेयर है जो कि सिमिलर टू यू है, आपके प्रोडक्ट के जैसा है, उसकी बात कर रहे हैं। आपका डिफरेंट कैसे है, अलग कैसे है,
मार्केटिंग प्लान क्या है, कैसे आप इसको प्रोडक्ट को लेकर जाना चाहते हैं मार्केट में, टीम कौन कौन है और उसका प्रोफाइल पोर्टफोलियो क्या है, टीम का एक्सपीरियंस क्या है, हर एक व्यक्ति का उसका स्किल सेट क्या है, एंड ट्रैक्शन माइलस्टोन जो अभी तक आपने अचीव किए हैं। राइट अगर आप चाहोगे तो यहाँ से बहुत सारे देखता हूँ मैं एयरबीएनबी का, अच्छा नहीं खुलेगा। सो ये एयरबीएनबी, उबर एंड फेसबुक, इनका पिच जो है वो इजी अवेलेबल है, आप इनको फॉलो कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं, रेफरेंस के लिए बनाइएगा अपना। सो मैं अब ये चाहूंगा कि हर व्यक्ति जो इस यहाँ बैठा हुआ है, आइदर टीम में और इंडिविजुअल, जैसे जो भी उसको बेस्ट लगे, बट एटलीस्ट 5 पिचेस मैं चाहता हूँ, 5 सॉल्यूशंस मैं चाहता हूँ जो कि एक प्रॉब्लम को फोकस्ड हो, आइदर वी हैड डिस्कस हियर उन प्रॉब्लम्स पे, या फिर आपने कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है तो आप उस पर काम कर सकते हैं और हमें पिच कर सकते हैं। सो हम लोग इसके लिए आपको मतलब वी गिव यू ना सर्टेन डेज, टुडे इज 19 एंड आई विश यू टू बी प्रेजेंट दिस ऑन 27 तारीख को मैं चाहूंगा कि आप इसे प्रेजेंट करें, एंड 27 इज अ डे व्हेन वी ऑल विल हियर यू गाइस। पंकज जी, is it okay? Yes sir, it is always okay from my side. I definitely wish, क्योंकि यही वो प्रोसेस है जिससे शेक करने पर कुछ निकलेगा। बिल्कुल, I understand sir. So now you now collect the entries, right? कि कौन कौन सी टीम आ रही है आपके पास। मिनिमम 5 तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस ग्रुप से निकल के लोग आए, मतलब 5 प्रेजेंटेशंस होने चाहिए, 5 पिच प्रेजेंट होनी चाहिए, एंड 5 में जितने लोग ऐसा पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सारे एक साथ भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, that's their own choice. We are not now closing anyone. Yeah, exactly. कुछ सिग्निफिकेंट तो होना चाहिए। बिल्कुल, तभी समझ में आएगा ना कि हम लोग सही कर रहे हैं या नहीं। राइट सर, राइट। सो मैं ये पिच जो है आपको प्रेजेंटेशन आपको भेज दूंगा पंकज जी, आप इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि इनफैक्ट मैं एयरबीएनबी का भी मैं आपको भेज दूंगा, फेसबुक का भेज दूंगा, ये सब इनके साथ शेयर कर दीजिए। ये लोग इसके बेसिस पे अपने पिच डेक तैयार करें और हमें प्रेजेंट करें। डेफिनेटली वेरी वंडरफुल टर्म पिच डिजाइनिंग, ये मेरे को भी आज फर्स्ट टाइम पता चला। इट्स रियली ग्रेट वर्क। और कल हम लोग फिर इसके आगे बात करेंगे बिजनेस प्लान बनाने की, और इनफैक्ट कल से 2 दिन जो भी और हैं जिसमें कि हम लोग बात करेंगे बिजनेस प्लान की, हम लोग बात करेंगे बिजनेस मॉडल कैनवस को कैसे डिजाइन कैसे किया जाता है, उसे बात करेंगे। इनफैक्ट एक और टर्म से इसको बोलते हैं वैल्यू प्रोपोजिशन, वैल्यू प्रोपोजिशन कैसे निकाली जाती है, इस पे बात करेंगे। और ये सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा इनको, ये अपने पिच में इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि जब ये आएंगे 27 को प्रेजेंट करने के लिए, सो बहुत ज्यादा वैल्यूएशन करेगा। राइट सर, राइट, एग्री, एब्सोल्युटली एग्री। अब बेसिकली सर 2 मोटिव हैं हम लोगों के पास में, एक तो स्किल डेवलप करना और दूसरा इग्नाइट करना स्किल को डेवलप करने के लिए। 2 पैरेलल मोटिव्स हैं। सर साइकिल चलाना ना कोई किताब से पढ़ के नहीं सीख सकता, मानते हैं? राइट सर। तो उसके लिए साइकिल चलानी पड़ेगी। तो अगर आप अपने बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं कि कैसे पिच करा जाता है, तो पहले आप खुद इसको करके सीखें। अच्छा सर, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको हर कोई बेड पे बैठे हुए, मोबाइल हाथ में लेते हुए, टीवी देखते हुए, न्यूज देखते हुए सोचता जरूर है कि मैं कुछ करूं। बिल्कुल, मतलब अदर देन दैट, मतलब किसी भी लेवल और किसी भी लेयर पर मैं क्यों ना हूं, लेकिन 100% मैं कुछ करूं और आई विश टू डू समथिंग, कहीं ना कहीं कि द पीपल्स आर डूइंग, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं आई कैन डू द बेटर थिंग्स, है ना। पर जब व्हेन इट कम्स एक्चुअली टू मेक इट ऑन अ पिच, एक बात कहते हैं ना, कमेंट्री बॉक्स में बैठ के बोलना हाउ टू मेक अ शॉट, इट्स मच इजी। लेकिन उसी शॉट को जब आप पिच पे जाके एक्चुअली प्ले करते हो तो इट मेक्स अ डिफरेंस। तो वही चीज है कि आइडियाज तो दिमाग में चल रहे हैं, डिस्कशंस तो चल रहे हैं कि ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन उन आइडियाज को रखना, बात करना, ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। और how even the people are matured, definitely they are doing wonderful at their respective venues, मतलब लोग अपनी अपनी जगह पर बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट इवन दैट दे आर नॉट एग्री टू कम अप, या चाहते भी हैं तो सोचते हैं चलो छोड़ो, किसी और को, सेकंड वाले को देखते हैं वो क्या बोलता है, हम वहीं ऐड ऑन हो जाएंगे। एक स्टार्टअप है होप स्कॉच, राइट? आपने नाम सुना होगा फर्स्ट क्राई का। फर्स्ट क्राई, बिल्कुल। होप स्कॉच जो है ये एक स्टार्टअप है, एंड दैट इज स्टार्टेड इन 2017। ओके, राइट। आप इसे जरा एक बार देखिएगा।
Sure. मतलब इनका सेगमेंट आप समझ सुन लीजिए क्या है ये, दे आर वर्किंग इन ए सेगमेंट ऑफ ना किड्स वियर, राइट, किड्स एक्सेसरीज को, बिल्कुल. सो मतलब कहेंगे क्या कर रहे हैं, अगर और साधारण भाषा में बोलूंगा तो वो बोलेंगे कि साहब जो है वो बच्चों के कपड़े बेचते हैं। लेकिन आप उसकी वैल्यूएशन आज देखिएगा, अभी उन्होंने फिर 2-3 दिन पहले उसने आनंद का मैं इंटरेक्शन सुन रहा था योर स्टोरी के साथ, मतलब व्हाट कॉन्सेप्ट, व्हाट पेन एंड वैल्यू प्रोपोजिशन दे हैव थॉट अबाउट एंड क्रिएटेड, मतलब उन्होंने फर्स्ट क्राई को आज पीछे छोड़ दिया है, इतना इतना ह्यूज वैल्यूएशन है। सो मैं इनफैक्ट एक बहुत पहले की, मैं आज की बात नहीं, कम से कम 5-6 साल पहले की बात है, मैंने एक हिंदी न्यूज़पेपर में एक स्टार्टअप की स्टोरी आपको उसका बिजनेस शेयर करता हूँ क्या है प्रॉब्लम। देखिए कितना बढ़िया है, आप लोग हाईवे पे हम सब ट्रैवल करते हैं फैमिली के साथ, राइट, एंड लार्ज बाय एंड लार्ज ये प्रॉब्लम आप देखेंगे, अगर आपके साथ फीमेल्स ट्रैवल कर रहे हैं, ओल्ड एज मदर ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनके लिए क्लीन वॉशरूम आपको नहीं मिलेगा। मतलब यू हैव टू पुट इन एफर्ट्स एंड रिकॉल इट कि नहीं यार बॉस वो अभी है ना बीकानेर आएगा या फिर वहां रुकेंगे, फिर सब लोग अपना जाना हैंड वॉश करना, और फिर अब सो ये आप सोचिए कि उस पे एक व्यक्ति ने एक टेक्नोलॉजी बिल्ट आउट किया कि कैसे एक फीमेल्स के लिए इन्फेक्टेड फ्री ना वॉशरूम्स को कैसे क्रिएट करा जाए, कैसे यूज करने के लायक बनाया जाए। मतलब दिस इज ओपन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन चल रहा है इसलिए मैं बहुत डीपली नहीं जा सकता, लेकिन थॉट प्रोसेस समझिए कि एक पेन को समझना। इनफैक्ट हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, हम सब ने बहुत सारी मूवीज देखी हैं, चाहे पैडमैन की आप बात करिए, चाहे आप स्वदेश की जो मूवी है शाहरुख खान की, इसकी बात कीजिए, सारे एंटरप्रेन्योरशिप पे डिफाइंड है। एक व्यक्ति मतलब कुछ छोड़ करके आता है गांव में कुछ बनाने के लिए, क्या पागलपन है यार। सोशल एंटरप्रेन्योर का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, राइट, वेरी ट्रू। हम सब लोग जानते हैं इनको, जो अमूल के फाउंडर हैं वर्गीस कुरियन का कम्युनिटी मॉडल आप देखिए कितना बेहतर है कि उन्होंने जो दूध इतना सारा मिल्क निकलता था वो वेस्ट रहता था, उन्होंने उसको कम्युनिटी मॉडल में ला करके उन्होंने पूरे देश में सर्व कर दिया है। एंड व्हाट प्राइसिंग एंड वैल्यू क्रिएटेड इन अ सोसाइटी। सो डू नॉट लुक एट मतलब लुक एट द थिंग्स इन अ वेरी वेरी डिफरेंट वे, बर्ड आई व्यू से जरा दुनिया को देखना की कोशिश करिए और आपको लगेगा कि यार आप कर सकते हैं। अभी ये मत सोचिए कि आप, मतलब जनरली मैं देखता हूँ फीलिंग रहती है कि हम क्यों करें। सो मैं बोलूंगा कि आप इसलिए करें कि जब आप यहाँ से रुखसत हो तो आपके पीछे ना मतलब सिर्फ 4 लोग नहीं हो आपको ले जा रहे हो, आपके पीछे पूरा जमाना पड़ा हो यार। राइट, ये छोड़ के जाना है, ऐसा भाव होना चाहिए कि मुझे ये छोड़ के जाना है। So I am pausing here and then we reconnect tomorrow morning with the several questions. I again request all of you, please be ready with the questions. एक बार फिर से पढ़ के देख लो, पढ़ लो, समझ लो, फिर आके पूछो, so अच्छा लगेगा। अगर आपको बेसिक्स कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं तो मैं उस पर आपको बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट डिलीवरी कर सकता हूँ कि कैसे जेआरडी टाटा ने इस देश में एंटरप्रेन्योरशिप मूवमेंट स्टार्ट किया, राइट। एक बहुत बढ़िया बुक है द अचीविंग सोसाइटी, आप सब उसको पढ़ सकते हैं, डेविड मैकलैंड की बुक है। एक बुक है द इंडियाज एंटरप्रेन्योर्स करके है, रेखा परिमल की बुक है ये, आप देखिए पढ़िए जा करके। बिरला साहब ने और टाटा साहब ने और धीरू भाई अंबानी ने क्या किया यहाँ पे, मतलब वो थॉट कहाँ से लेकर के आए। सो विचार बदल जाएगा, मनोस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले, ये भाव लेके चले तो हो जाएगा। सो मैं यहाँ से पॉज करता हूँ सर। परफेक्ट मनस्थिति ही वास्तव में परिस्थितियों को बदलती है। बहुत अच्छी बात कही आपने, ये डेफिनेटली आई सपोज दिस इज अ की मंत्र फॉर दिस विंटर। इस विंटर में बहुत जगह काम आएगा। मनस्थिति पे अगर आप सोचेंगे तो बहुत जगह आप परिस्थितियों को बदल पाएंगे। ये सो गुड सर, वंडरफुल वर्ड्स। सो खुशी, आई विश you just have made your camera on, would like to interact. Sir said the problem day before yesterday. बताओ। Come with a better solution. Sir, I have thought for some solution. क्या? Last time मैंने टेक्नोलॉजी कहा था तो आपने कहा था कि वहीं जाके अगर यूजर विजिट करे, मतलब कस्टमर विजिट करे, तो कैसे उसकी प्राइसिंग डबल कर सकते हैं। सर हम लोकल ब्रांड्स को कनेक्ट कर सकते हैं। हम
like local brands, suppose these are on the मतलब main street usually. Those like Gopikawalas like Sabji, everybody goes from good people, from medium, मतलब everybody buys vegetables in somehow. ठीक है. So for a weekly basis, we can promote some brands, promote some new shop opening. Suppose a requirement in a shop, a requirement in some XX place requires like home made for home or helping boy for some certain. खुशी, brand से क्या समझते हो तुम? What do you understand by brand? The brands means like local brand, local masalas. Somewhere someone is नहीं. ब्रांड का मतलब क्या होता है? ब्रांड मीन ट्रस्ट, राइट? अगर आप कहीं पे भी हल्दीराम, बीकानेर, मैगडी देखेंगे ना, सो आप किसी से ये, कोई भी व्यक्ति किसी से ये गॉसिप नहीं करेगा, बात नहीं करेगा कि उसका टेस्ट क्या होगा. Everyone knows that it's best at there. क्यों? Because it's created ना trust. Let's say talk about ना females के आपके जो आप क्या बोलते हैं इसको, आप लिपस्टिक लेते हैं या फिर कॉस्मेटिक आइटम्स की बात करता हूँ, लेक्मी की मैं बात करूं, है ना, या फिर और कुछ और प्रोडक्ट्स की बात करूं, वो सब क्या करते हैं? दे क्रिएट द ब्रांड, मतलब ट्रस्ट वैल्यू क्रिएट करते हैं. And creating a trust value in the market with the consumer, with the customer, is not a day one task. It not happen in a day. It's require a continual quality committed efforts, right? अगर आप एक ब्रांड है, मतलब लेट्स से मैं खुशी की बात करता हूँ कि खुशी इज अ ब्रांड एम्बेसडर, वर्ड यूज करते हैं स्टूडेंट एज ए ब्रांड एम्बेसडर. क्या खुशी शार्प 9 o'clock क्लास में आती है पिछले 5 साल से, 4 साल से, 3 साल से? क्या खुशी ने ये ट्रस्ट वैल्यू क्रिएट करा है टीचर्स में? अगर ये क्रिएट करा है तो डेफिनेटली खुशी ने एक ब्रांड क्रिएट करा है. So creating a brand is not an easy task in a day, and it's could be very difficult for वो जो गोलगप्पा ना वेंडर है उसके लिए, right? The local promotion, I can say, advertisement. Local promotion का मतलब मार्केटिंग हो गया. मार्केटिंग में पैसे डबल नहीं होंगे, मार्केटिंग में पैसे जाएंगे, मार्केटिंग में पैसे आते नहीं है, जाते हैं, है ना. सो ये क्या करेगा? और कॉस्ट को इनहांस कर देगा. करेगा नहीं करेगा? Marketing means ads, marketing means distribution of handbills, marketing means publish some your ads in local channels. The local channel, local vendors पे आएंगे. They don't need to pay. Instead, people will pay for them. Like people today, nobody reads local newspaper. ठीक है. Everybody reads news on Google, but Google don't serve local news. So वो वेजिटेबल वेंडर्स को क्या फायदा होगा इसमें? अभी मैं ये समझ नहीं पाया. सर, जब उनको कोई एड प्रमोट करने के लिए सपोज उनके पास बैनर छोड़ के जाएगा, तो दे विल पे फॉर दैट. There could be increase, enhanced. I can't exactly say it would be twice. Initially, it could be maybe not so worth it, but laterly, कुछ time बाद when people will realize that it is working. Like somebody open a home. Is it look at Kushi, look at in this is it a real pain? मुझे ऐसा लग रहा है कि वेंडर्स, जो वेजिटेबल वेंडर है, उसके लिए एक टास्क और बढ़ गया. उसने ना मतलब सेकंड जॉब ले लिया है कि लोगों के ना प्रोडक्ट को, सर्विस को प्रमोट करने का. सो वो वेजिटेबल बेच छोड़ करके ना वो उसमें ज्यादा ध्यान दे रहा है अभी. सो ऐसा ना उसका प्राइमरी बिजनेस स्पॉइल हो जाए. या वेदांग want to say something? Yes sir. Please. सर, if वो स्टार्टिंग में अपना जो ऑल मार्केट के हिसाब से जो और वेंडर्स बेच रहे हैं उससे अगर 1-2 रुपए कम में बेचेगा, तो जो पब्लिक होगी वो उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगी. अच्छा. if वो अपना प्रॉफिट ना देखे स्टार्टिंग में, और एज इट इज जैसा वो खरीद रहा है उसी दाम में अगर बेचे, तो स्टार्टिंग में पीपल उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे एंड रेगुलर कस्टमर्स बन जाएंगे. आफ्टर सम टाइम जब उसके रेगुलर कस्टमर्स बन जाएंगे, तो अगर वो रेट भी इंक्रीज करेगा तो उन लोगों को वो ज्यादा सही लगेगा. ऑलराइट. मेरा सिंपल क्वेश्चन है वेदांत, क्या आप हर बार एक ही शॉप से बार्बर के पास जाते हैं हेयर कट कराने के लिए? यस सर. कितने सालों से? सर 4 to 5 years. क्या बीच में कभी आपने चेंज नहीं किया है? तो जब मुरादाबाद हॉस्टल में आया था तब मैंने चेंज करा था बस. ठीक है. जल्दी आप देखिए कि
रेगुलर कस्टमर तब तक फिक्स आउट नहीं हो पाएगा जब तक वो किसी मेंबरशिप मॉडल पे नहीं आए। हो सकता है ये मतलब इसमें एक सोल्यूशन मुझे दिखता है कि आप एक मेंबरशिप मॉडल की इजाद कर दें और जो वेजिटेबल वेंडर है वो बोले कि बहन जी आप मेरा मेंबरशिप मॉडल लीजिए, आपके घर में फ्री डिलीवरी मेरी तरफ से, आपको ऑर्डर देना है, बस फोन से बताना है, व्हाट्सएप पे बताना है, फ्री डिलीवरी, और बिकॉज यू आर माई मेंबर आपको 5% का डिस्काउंट। देन इट्स वर्क, देन इट्स वर्क। वेरी गुड वेदांग, वेरी गुड एंड वेरी गुड। खुशी तुमने बहुत कुछ सोचा इसमें, खुशी ग्रेट, Thank you, sir. राइट, वंडरफुल। सो हम लोग इसको फ्रीज आउट करेंगे। खुशी तुम इसको और वेदांग तुम लोग एक टीम में भी काम कर सकते हो। यू बोथ कैन वर्क इन ए ना वर्किंग इन टू सॉल्व वन प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम, सो यू बोथ कैन वर्क इन अ सिमिलर टीम इफ पॉसिबल, राइट, एंड प्रिपेयर पिच अराउंड इट। आई विल हेल्प यू आउट। पिच बनाओ एक बार तो 27 को प्रेजेंट करो और फिर हम लोग इसमें और वैल्यू प्रोपोर्शन क्रिएट करेंगे व्हेन वी लॉन्च ए स्टार्टअप इन मुरादाबाद। ठीक है? Yes, sir. All right. So thank you, Pankaji. We are closing off for all. We are signing off here for the day, and we meet tomorrow morning 10 o'clock sharp. Thank you. Sure, sir. Sure. Thank you very much, sir. So although we always wish to say thanks to you, but you are the one who always stops us. But actually, from the bottom of heart, absolutely, it's a much interactive session, and definitely we are enjoying. Even that I'm personally, I just say I'm enjoying this, and definitely it's like that. I am every day coming to you, and we are having a cup of tea, sharing and thoughts and discussion like that. So that always we want कि हम चाहते हैं अपने दोस्तों के पास जिनको हम पसंद करते हैं उनके पास जाते हैं, बैठते हैं और एक रिलैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ प्रोडक्टिव डिस्कशंस करते हैं। इट्स समथिंग लाइक दैट। ऑलराइट, एक और चीज पंकज जी, आपको एक और चीज मैं आपको अभी शेयर करूंगा जी। वी हैव ए कॉल फॉर ना, वी हैव जस्ट ओपन ए ना प्रपोजल कॉल, फंडिंग कॉल, राइट, एंड दैट्स entirely grant in it, right? So if some of your students, faculty members are willing to apply for it, they may apply, sure, right? मैं आपको भी शेयर कर दूंगा, so आप ग्रुप पे सर्कुलेट कर दीजिएगा। और इसमें हम आपको आइडिया से प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को बिल्ट आउट करने के लिए अप टू 4 लाख रुपीस का फंडिंग दे सकते हैं। So nice. That's not small amount, and आपको फंडिंग, पैसा तो एक अलग चीज है, चलिए, इसके अलावा जो आपको मेंटरिंग, असिस्टेंट, सपोर्ट बनेगा उसको बनाने के लिए और उसको लॉन्च करने के लिए, कमर्शियल करने के लिए, वो एक सुपर्ब है। और विजिबिलिटी जो मिलेगी टीएमयू को भी मिलेगी और उसके बच्चों को, फैकल्टी को मिलेगी। एंड मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप में से कुछ लोग इंटरेस्टेड होंगे तो। सो मैं आपको शेयर कर दूंगा सर। थैंक यू। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। श्योर, डेफिनेटली इट्स गुड फॉर अस। थैंक यू। राइट सर, बाय बाय। So Salim sir, always Mahin sir does not want to really come up with a vote of thanks. So that's why I just interrupted in between and I just say thanks to him because immediately he just signed out. So before he sign out, I just say a complete thanks to him. So now the session is finally open for you to just call up for the quiz and as well as to just convey a vote of thanks to the rest of the peoples. Those are definitely part of this journey. Okay, thank you. मैं महेंद्र सर से एक बात करना चाहूँगा कि सर रियली it has been a very wonderful and nice session. Actually मैं भी एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रहा हूँ पिछले 2 साल से and आज कुछ नया सीखने को मिला मुझे। and आपने जैसे कहा कि आप अभी सर के साथ कुछ शेयर करने वाले, तो I'll be very interested for this. So I propose vote of thanks here. Good afternoon, one and all. Present here, especially our eminent speaker, Mr. Narendra Gupta sir, respected director sir, Professor R.K. Dwivedi, convener of TDP, Mr. Pankaj Goswami sir, and entire organizing team and all participants. It is such an honor for me to get the opportunity to thank you all. On behalf of FOACS TMU, I would like to express my gratitude to all esteemed members, participants of today's event for their valuable presence and contribution to make this event a great success. I extend heartfelt gratitude to our eminent speaker, Mr. Mahendra Gupta sir, to take out time to grace the event. Thank you, sir, for inspiring and encouraging us with your words.
on this 25th day of TEDP. I also extend my thanks to our respected Director Sir, Professor Rakesh Kumar Dwivedi, convener of TEDP, Dr. Pankaj Goswami, and entire organizing team. Thank you everyone once again for your valuable presence and in 25th day of TEDP means technology-based entrepreneurship development program. Thank you one and all. Thank you Pankaj sir for giving me such a good opportunity. It's over to you sir. Thank you very much, Salim sir. Definitely, you were the main part of this today's session, and definitely you coordinated so well with our external eminent speaker, and definitely that kind of responses and the support we could be able to reach this 25th day. But we understand that, and definitely, if the director sir was just saying that it's absolutely a marathon, but we know that we are passing the baton to each other. एक मशाल एक से दूसरे को हम देते जा रहे हैं और वो मशाल के सपोर्ट से हम आगे बढ़ पा रहे हैं। थैंक यू अली सर, आपका रिस्पांस भी हमारे लिए बहुत एडमायरेबल है और आप लोगों के एक्सपीरियंस ही यहाँ पर काम आएंगे एंड डेफिनेटली वी शुड बी एबल टू डू समथिंग। ठीक है, अभी मुझे ये क्विज लिंक यहाँ सलीम सर ने शेयर कर दिया, 10 मिनट्स के लिए मीटिंग ऑन है, देन आफ्टर ये मीटिंग क्लोज हो जाएगा तो प्लीज आप ये फिल कर दीजिए सभी लोग। थैंक यू वेरी मच एंड विद दीज वर्ड्स विल मीट टुमारो। Thank you sir.